सो गाइस वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर न्यूज़ फ्लैश। तो अपडेट होने के लिए तैयार हो जाइए एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और लाइक शेयर वगैरह सब कर लेना क्योंकि आप बहुत सारा कुछ अपडेट होने वाले हो आज न्यूज़ के साथ। So starting off with the number one news of the month and probably the quarter for Gigabyte, क्योंकि Gigabyte का इंटरनल सर्वर हैक हो चुका है और ये हैक में ये एक रैंसमवेयर अटैक है। बाय द वे रैंसमवेयर अटैक में उनके बायोस अपडेट्स, उनके मदरबोर्ड डिज़ाइंस और काफ़ी सारा कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया। इनफैक्ट अनरिलीज मदरबोर्ड्स के डिज़ाइन भी चोरी हो चुके हैं एंड दे आर होल्डिंग गिगा फॉर रैंसम। एक हैकर्स ने एक मैसेज डाला हुआ है कि दे वांट टू टॉक टू Gigabyte एंड प्रॉब्ली गेट सम मनी फॉर दिस डीड। सो या रैंसमवेयर अटैक हो गया बेचारे Gigabyte पे। प्रेस F फॉर रिस्पेक्ट। नेक्स्ट अप नंबर 2, AMD हैज लॉन्च 6600 XT, another graphic card which you cannot buy or probably buy at expensive rates। वैसे ये ग्राफिक कार्ड शायद अवेलेबल भी रहे। इट्स क्लोज टू 2060 लेवल परफॉर्मेंस और सो इट सीम्स। 8GB DDR6 है इसके अंदर। तो yeah, this is more of a mid-level kind of a graphic card. It's not enthusiast level. It's not purely entry level. We will be reviewing that very soon on our channel, so stay tuned for that. Talking about graphic card releases, Nvidia has released their own new graphic card, the RTX A2000. For those who didn't know, graphic card naming change कर चुका है Nvidia quadros के अंत तक. Now quadros are being named A2000, A4000, A5000 and A6000. So the A2000 becomes an entry level 3000 CUDA core graphic card, workstation level graphic card है, इसमें mini DPs है। So yeah, एक और graphic card launch हो चुका है। We'll probably be reviewing that sooner or later आपके सामने। Next up, the largest ever cryptocurrency heist has happened। 600 million का heist किया है in cryptocurrency। तो DeFi प्लेटफॉर्म पॉली नेटवर्क पे ये हुआ है। इथीरियम वर्थ 600 मिलियन चोरी हो चुका है। यू नो एक्चुअली ये न्यूज़ बैड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए जिनके पैसे चोरी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ के जैसे भी सोच सकते हो, बिकॉज नाउ द ट्रस्ट फैक्टर जो बनता जा रहा था क्रिप्टो करेंसी पे और ये एक्सचेंजेस पे, इट्स जस्ट इरोडिंग बाय दीज काइंड ऑफ न्यूज़ इज कमिंग आउट। और ये हो रहा है। अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस are like randomly shutting up shop and running away. Their founders are doing some gitchy or scam, you can say, and these kind of things just erode customer confidence in these third party exchanges. तो हाँ, शायद demand for GPU will go down, cryptocurrency value will go down because of this, because again it doesn't make sense because it's not safe. I think they are little this part क्योंकि बहुत ज़्यादा। Now number 5 क्या so the final news update for the day is 12700K लीक हो चुका है। इन द सेंस उसके नंबर ऑफ कोर्स, उसका क्लॉक स्पीड, उसका बूस्ट क्लॉक वगैरह वगैरह लीक में आया है। वील पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। WCCF टेक करके वेबसाइट पे इसका स्क्रीनशॉट आया है। सो इट्स सपोज टू बी अ 12 कोर 20 थ्रेड प्रोसेसर। सो इट्स अमेजिंग टू सी कि इंटेल इज एक्चुअली ट्राइंग हार्ड टू कैच अप टू AMD। नाउ कोर्स तो बढ़ चुके हैं, थ्रेड्स भी बढ़ रहे हैं, it seems कैश भी बढ़ने वाला है। so yeah, it's gonna get interesting generation on generation. So yes, that was the video for today. Thank you for watching. Hope you liked what you saw and yeah, let us know in the comments what kind of videos you'd like to see और definitely boss like जरूर छोड़ना क्योंकि एल्गो में हमें ऊपर आना है। So thank you for watching. Cheers. Phone. Oh yeah, this is Swiggy dude. बात करके ला ले। Cheers. चलो बन मस्का खाते हैं।